Om Shanti. Sister Mana. Okay. Shanti Bai, Om Shanti Bai. I had Shanti. to change my location because my neighbor is repairing the house and there's a lot of noise in the background. So I Oh, didn't want to disturb you. yeah. Uh, Okay. yes, Sundays everybody tried to do everything. Okay, right. I understand. So you Yes. are most welcome. This is Kareli Bagh, Baroda Kareli Bagh family. Okay. And Oh, thank you for inviting me to your family. and we are fortunate that we are going to listen to your great experience today night. So we have Sister Savita, and she is translator for your class today. She is from Madhuban. Okay, so Madhuban is also included Yes. in this program, right? Through our sister Savita. Thank you. Okay, and uh, Yes, uh, Shanti's sister. I know her Shanti. face. I yeah. don't think she knows my face, but I've seen her in Yeah, Madhuban. we met Yes. in Madhavan. Ah, Yes. she is very familiar face to all double foreigners. Okay. Savita Not Ben. all. Yes, it seems that To a few. it Very seems that popular, way. very She's had a popular and well-known yes. personality she is. Okay. This is our Ah, instrument sister, teacher. Um, welcome. Welcome, Baroda. Shanti sister by Ben Shanti Welcome, Didi. Baroda. ये, Thank you, ये thank you. बारबाडोस से है चंपा बेन, ये बारबाडोस से है. बारबाडोस अच्छा, कैरेबियन कंट्री, कैरेबियन. अच्छा, ओके. बारबाडोस. बारबाडोस, हाँ. नाम Barbados. पता है नाम. हाँ. Okay, sister, please, you may start your session now. Okay, Shanti again and Man Man Above. I love saying Man Man Above because it puts me in a very soul conscious state. And I'm told that at the beginning, you used to greet each other with Man Man Above. And so I have taken that up as one of my greetings, Man Man Above. ओम Yeah, my name शांति. is Myrna. ओम Oh, I'm शांति. sorry. मुझे आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा. और मुझे हमेशा मनमना भव का मंत्र जो है बहुत अच्छा लगता है. शुरू में हम सब जब ज्ञान में आए थे, हम एक दूसरे को भी जैसे मनमना भव कह के पुकारते थे. Yes, I have been in knowledge. This is now 40 years, and I am thoroughly enjoying it. इनको 40 साल ज्ञान में हुआ है, अच्छे से इसको एंजॉय कर रहे हैं. I have always been a searcher of truth, and I have been a seeker. इन्होंने And हमेशा कंटिन्यू. I wanted to understand truth. इन्होंने हमेशा सच्चाई को ढूंढा है, सच्चाई को जैसे खोज रहे थे. तो हमेशा इनको कोई भी बात के पीछे जो सच्चाई है ना, उसका जैसे खोज रहा. I'm an educator by profession, a principal, and so I have a very curious mind. I like to know things, and I like to know the truth of things. And so that is on an academic level, as well as on a religious and spiritual level. तो इनका प्रोफेशन जो है ये प्रिंसिपल रहे हैं. तो क्यूरियस माइंड तो होता ही है, जो जैसे इंटेलेक्चुअल अगर कहा जाए, तो इनको हमेशा सच्चाई के बारे में जानना, भले एकेडमी में हो, जो जहाँ इनकी प्रोफेशनल फील्ड है वहाँ पर हो, या रिलीजियस या आध्यात्मिकता की बातें हो, कहाँ पर भी हो, इनको जानना, उसकी सच्चाई के बारे में जानना, उसकी गहराई में जाना हमेशा अच्छा लगता था. I'm retired now, and I have more time to give to Baba's service. I am the coordinator of the center in Barbados. तो अभी ये रिटायर्ड है, इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है जो बाबा की सेवा में पूरा दे सकते हैं. और ये जो बारबाडोस सेंटर है, वहाँ की सिस्टर जो है कोऑर्डिनेटर है, संभालते हैं निमित्त, वहाँ की इंचार्ज है. And one of my mother, I call her my mother because she introduced me to Raj Yoga. Her name is Sister Kamood. I think she's in Madhuban at this time. Yeah. So she introduced you to Baba? Yeah, she was my teacher.
Okay. She spent some time in the Caribbean and she was my teacher. तो एक कुमुद And दीदी है अभी जो पांडव भवन में रहते हैं, तो वो हम जानते हैं उनको, अभी भी पांडव भवन में हैं। तो जो कुमुद दीदी है वो कैरेबियन कंट्रीज में कुछ साल उन्होंने सेवाएं किया, तो इनकी वो टीचर रही है। she was a very lovely teacher and very loving and very much committed to Baba and spreading Baba's knowledge. तो I love her so much. तो बहुत ही प्यारी बाबा की बच्ची है, बहुत ज्यादा बाबा की सेवाओं के प्रति लगन वाली है, और इनको भी उनके प्रति बहुत ही ज्यादा प्यार था। But I have a little joke to say about her. When she first spoke to me about the knowledge, I couldn't understand what she was saying. Her pronunciation was so different from what I was accustomed to. And I was just fascinated with her energy and her enthusiasm. And I told her that I didn't understand everything she was saying. And she gave me a correspondence course and told me, go home and read it. Go home and I did. Go home and read it. And read it, yes. Okay. And study it. Okay. तो जो सिस्टर कुमुद है उनके बारे में एक ये जोक सुनाना चाहते हैं, क्योंकि हर एक जो इंग्लिश बोलते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन, बोलने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो वो जिस तरीके से बात करते थे इनको समझ नहीं आता था, लेकिन उनमें जो वाइब्रेशंस थे, उमंग उत्साह था, एनर्जी थी, शक्ति थी, वो उनको अट्रैक्ट किया। और इन्होंने इनको एक करस्पॉन्डेंस कोर्स दिया सिस्टर को, और कहा कि घर जा करके आप पढ़ना है इसको। So I went home and I studied. I spent a lot of time because it was such new knowledge. I knew about soul, but I wasn't aware that I was a soul. And it was just such new knowledge coming into my head. I had to read and read and read again. And then she taught me how to meditate, which was something new again. But she was so patient. And she really introduced to me the knowledge, which was Baba's knowledge, and also yoga. She was a very good teacher for those two principles. तो इनको जैसे एक नई बात मिली, ये थोड़ा बहुत आत्मा वगैरह के बारे में जानते थे, लेकिन जो करस्पॉन्डेंस कोर्स का किताब मिला ना, उसको पढ़ते रहे। सिस्टर ने इनको कैसे मेडिटेशन के साथ बहुत ही धीरजता रखकर इनको कोर्स दिया। And she would say, if I was having a moment of not understanding, she would say, fly, 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 fly. So she taught us how to fly. If we are having a moment of maybe coming down in our consciousness and not understanding it, she would say, fly, 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 meaning fly away from the mundane. Huh? Okay. तो जैसे कभी कभी इनको ज्ञान समझ में नहीं आता था, ये क्या समझा रहे, क्या मेडिटेशन वगैरह है, तो फिर कुमुद दीदी जो है वो क्या करते थे, बोलते थे फ्लाई फ्लाई फ्लाई, उड़ जाओ, इस दुनिया से उड़ करके परम धाम पहुंच जाओ। तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा क्रमणिकता के तरीके से भी इनको जैसे मेडिटेशन वगैरह सिखाते थे। So she's the one who taught me how to be angelic, flying away to the angelic subtle region and then to Paramdam. From the very beginning. तो देखिए, जो सिस्टर कुमुद है, इनको एंजेलिक स्थिति क्या होती है, फरिश्ता क्या बनना क्या होता है, कैसे उड़कर परमधाम जाना है, ये सारी बातें इनको वही पहली टीचर है जो इनको सिखाया था। She also gave us a deep love for service, and she was very courageous. She would take us places that we would not sometimes want to go. So she gave us that deep understanding for service. And so I really appreciate her introduction to Raj Yoga. तो इनको जैसे सिस्टर ने ज्ञान के बारे में भी, मेडिटेशन के बारे में भी, राजयोग के बारे में भी बहुत गहराई से समझाए, तो इनको भी जैसे अच्छा लगा। तो
ये जैसे उस दीदी को बहुत मानते हैं क्योंकि वो ही निमित्त बने इनको ज्ञान में गहराई में ले जाने में. And those deep sanskars have remained with me for now, up until now. I still have love for Baba's knowledge, love for yoga, and love for service. तो उन्होंने And जो then संस्कार या go ahead. Go या ahead. And then, of course, after 3 months, I was so intoxicated that I wanted to come to Baba in Madhuban just to meet Baba. And so she arranged that, and I was able to meet Baba in about 3 months' time. I was in Madhuban. So this was in which year? This was in 1981. तो जो देखिए बाबा बोलते हैं ना संस्कार बनाना है किसी का सेवा माना, तो उन्होंने जो इनमें संस्कार डाला ना ज्ञान का, योग का, गहराई का, तो इनमें जैसे वो पक्का होता गया बाबा के प्रति प्यार, सेवाओं के प्रति प्यार भी जैसे इनमें बढ़ता गया. तो 3 महीने में जैसे ऐसे तैयार हो गए और ये चाहते थे कि मैं जल्दी मधुबन जाऊं और बाबा से मिलूं. तो 1981 की बात है. तो सिस्टर कुमुद ने इनको मधुबन आने की वजह से व्यवस्था की बाबा से मिलने के लिए. But there's also another side to this story, because I had been looking for truth. And so when I came to Raj Yoga, there were 2 questions I wanted answered. One was, was this organization introducing and living celibacy? That was one question I wanted to ask. And are they vegetarians? And if the answer had been no, I would not have stayed. So you were liking celibacy before coming to GAN? Yes, I was, and vegetarianism. Okay. And then she smiled. And maybe that's why she opened her heart to me, because she probably realized that I was ready for Raj Yoga. देखिए कैसे कैसे संस्कार वाले होते हैं. तो ये ज्ञान में जैसे आने वाले थे ना राजयोग सीखने के लिए, जैसे सेंटर पर आए, इन्होंने वहाँ जो टीचर कुमुद दीदी थे उनको 2 क्वेश्चन पूछा. पहला क्वेश्चन, क्या आप लोग पवित्रता को फॉलो करते हो, और दूसरा क्वेश्चन पूछा, आप वेजिटेरियन हो. तो अगर उन दोनों क्वेश्चन का आंसर नो होता, ये वहां पर कंटिन्यू नहीं करते, क्योंकि इनको ज्ञान में आने से पहले ही वेजिटेरियनिज्म भी पसंद था और प्योरिटी भी पसंद था. I went to Madhuban after 3 months in knowledge. Did I find you or did you find me? And I was silent. I couldn't act it. तो जब ये बाबा से मिले तो बाबा ने इनको बाबा को ढूंढा या बाबा ने आपको ढूंढा? एक क्वेश्चन इनको बाबा ने से पूछा, तो ये तो जैसे साइलेंट हो गया, मैंने आपको ढूंढा. बहुत साइलेंट होकर के बाबा से जैसे मिल रहे थे. Yes. He also gave me the blessing of being a knowledgeful soul. And I have really enjoyed being in the ocean of knowledge. And Sister Kumud inspired me to give my skills to the Yagya, developing the Yagya. And so I was also into theater and the arts, and I brought my drama skills to the center. And so we performed dramas like I'm Searching for Truth, and I'm a Soul, the Lamp and the Flame, You're the Star of My Show. We all did those dramas, and we brought them to Madhuban. तो बाबा ने इनको नॉलेजफुल सोल, ज्ञान युक्त आत्मा का ब्लेसिंग दिया बाबा से. तो ओशन ऑफ नॉलेज के साथ इनका मिलन हो गया. फिर धीरे धीरे सेवाओं में इन्वॉल्व करना शुरू किया. इनको ड्रामा आर्टिस्ट जो करते हैं ना सेवा वगैरह करने के लिए, उसमें बहुत इंटरेस्ट था. तो ऐसे ऐसे ड्रामास बना करके जैसे मधुबन में लाते थे दिखाने के लिए, जिसके थ्रू सेवा हो सके. Yes, and I like to weave Baba's knowledge into everything. I'm a weaver, and one of those are one of my metaphors. I'm a weaver, and I weave Baba's knowledge into everything. And when I was in the education and working in my profession, I would bring Baba's strategies and techniques and secrets into management. ओके.
तो इनको अच्छा लगता था कि जो बाबा ज्ञान देते हैं उसको, ये जो इनका प्रोफेशन था ना, ये प्रिंसिपल थे, तो वहां पर जैसे बाबा का ज्ञान को प्रैक्टिकली कैसे हम अप्लाई करें। नहीं भी तो Yeah. कितनी बड़ी सर्विस है, तो इसका जैसे प्रैक्टिस करते थे कि कैसे मैं बाबा के ज्ञान को मैनेजमेंट में अपने जो जहाँ पे पढ़ाती हूँ, जहाँ मैं प्रिंसिपल हूँ, वहां पर मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करूँ। टिल व्हेन यू वर्क सिस्टर, which year you left like job, your locking job? We about 5 years ago. 5 years Okay. ago, I was retired. Yes, and so I've been in many different places in Barbados and outside of Barbados. तो ये पिछले 5 साल से इन्होंने जॉब छोड़ा हुआ है, 5 साल हो गए इनको जॉब से रिटायर्ड होकर के। ये बारबाडोस में और भी अलग अलग स्थानों पर रह करके अपने लौकिक जॉब करते करते बाबा की सेवाएं भी किया है, क्योंकि विदेशों में कॉमन है, करना ही पड़ता है, लौकिक जॉब भी आपको करनी है और उसके आधार पर आपको सेंटर चलानी, उससे जो पैसा मिलता है और सेंटर की सेवाएं भी करनी, वो वहाँ पर बहुत कॉमन है। Yeah. But before Yan, I taught in United States, in Africa, and some other Caribbean islands. So I've had a long span of education, both nationally and internationally. तो सिस्टर ने अमेरिका में भी पढ़ाया है, अफ्रीका में पढ़ाया है, कैरेबियन कंट्रीज में, आइलैंड्स में भी वहाँ पर पढ़ाया है टीचर बन करके। तो इनको जैसे टीचिंग प्रोफेशन में बहुत ही ज़्यादा अनुभव रहा, एज ए प्रिंसिपल भी रह करके अपना वहाँ पर काम किया है। तो ऐसे वेराइटी, जैसे अलग अलग स्थानों पर रहने का इनको अनुभव मिला था। विच सब्जेक्ट यू यूज्ड टू टीच सिस्टर? I was a teacher of geography and history, but there are two things, either history and geography. Yeah. And I was mostly a principal, though. I trained teachers in Africa. Okay. I trained teachers in Africa. Mm. And in the United States, I was teaching geography. Okay. And sometimes history. The Baba also teaches history and geography, no? Yeah, absolutely. So that's why it was just so, the Lokik and the Alokik came together so well. You see, I can see why Baba says, it's just lovely, the connection. Yes, बाबा भी yes. हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं, सिस्टर भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाती थी, लेकिन ये टीचर्स को ट्रेनिंग देती थी क्योंकि ये प्रिंसिपल थी ना। तो अफ्रीका में जैसे टीचर्स वगैरह को ट्रेनिंग देती थी, तो ये इनका जैसे मेन जॉब रहा एज ए प्रिंसिपल, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाते थे। Yes. And so, as I said, I weave the knowledge into every aspect of the practical. And my teachers, in terms of management, I would see something good in them. I would be not critical. If they're giving me any kind of opposition, I will look at their positive sides and bring this to their attention. And I found that this helped me so much to have a lovely environment in which teachers would cooperate and they would give me their skills without grumbling because I saw their speciality. And that's what Baba does for us. He sees our specialities. तो जैसे बाबा हमारे में विशेषताएं देखता है ना, ऐसे सिस्टर क्या करती थी अपने जहाँ पर प्रिंसिपल थे ना, तो वहाँ पर अपने जो उनके साथ ही जो टीचर्स थी उनकी भी विशेषताएं देखती थी। कोई भी बात अगर हो जाती है तो उसका पॉजिटिव साइड देखकर उनको जैसे एक लवली एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखना। बाबा भी तो वही करता है, कुछ भी बात होते बाबा कहते हैं विशेषता देखो। तो ऐसे ही सिस्टर क्या करती थी, उनके जो स्टाफ थे, टीचर्स थे, उनकी विशेषताओं को देखकर जो भी बात हो गई उसका पॉजिटिव साइड देख करके जैसे उस सिचुएशन को हैंडल करती थी। And I also pass that down to the students. And so when they come into my office, because the teacher may send them for punishment because they have done something they consider wrong, I would try also to find their speciality. I would talk to them and try to understand them and find something good about them and try to expand on it. And so they would leave my office sometimes smiling. And teachers would say, I sent them in there to get punished. Why are they smiling? तो ये काम जैसे स्टूडेंट के साथ भी यही करते थे कि स्टूडेंट का अगर इनके पास कोई कंप्लेंट जाता तो स्टूडेंट को भी जैसे पॉजिटिविटी दे करके उनमें कुछ न कुछ विशेषताएं भर करके पॉजिटिव बनाते थे उसको। तो स्टूडेंट्स टीचर्स पूछते थे, हमने तो स्टूडेंट्स को आपके पास भेजा था ताकि आप इनको डांट सको, आपने तो इनको मुस्कुराया, लाइक इनको
स्टूडेंट्स तो हंसते हंसते आपके ऑफिस से निकल रहे हैं, आपने ऐसे क्या किया करके इनको पूछते थे. Yes. So that's in the professional level. And I still do that now with people I meet. I try to see everyone as a soul and to see if I'm interacting with them something positive. Even though they may want to give something negative, I can't consider myself to be like a swan, picking up the pearls, and giving it back to them. And it makes the relationship much more harmonious and much more cooperative. Yes. ये हमेशा यही कोशिश करते हैं कि सबके साथ इनका जो संबंध है वो अच्छे रहे. कोई भी बात हो जाती है उसमें पॉजिटिविटी देके नेगेटिविटी ना देके, इससे क्या होता है कि हर एक के साथ अच्छा संबंध जैसे बन जाता है. So Baba's knowledge has been for me a great advantage. I get a lot of benefit from it on all levels. And in this turbulent world where everything has become so complex, I am finding it a very, very comfortable and supportive anchor. इनको हमेशा बाबा का ज्ञान एक सपोर्ट, क्या कहे, एक सपोर्ट जैसे मिला है, एडवांटेज बहुत मिला है ज्ञान से, क्योंकि दुनिया तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही अजीब व गरीब हुए दुनिया है. तो वहाँ पर उसके बीच में रहते भी जैसे हम कंफर्टेबल रहे, जैसे हम इजी रहे, ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के मदद से इनको इजी होता गया. Yes. When I lived in the United States in the 1960s, I was a big activist. I used to demonstrate with Dr. Martin Luther King for civil rights. I was into civil rights. And so I would demonstrate. At that time was also a student. And so there was a lot of student engagement. And I was part of that. And sometimes angrily so. So what is being an activist? What does that mean? Oh, right, fighting for civil rights. The right for Martin Luther King was like a Mahatma Gandhi for the people who are of African descent. They were not allowed to vote. There were separate counters for everything: bathrooms, water coolers, separate schools, separate residences. There was segregation, and so Dr. Martin Luther King wanted a better kind of life for those who were the victims of enslavement. And so there was this uprising in the 60s, and there was a lot of marching and singing, "We shall overcome." And students were very active in this. And I was a student at that time as well, and I participated. ओके. तो 1960s की बात है, जब यूएसए में, अमेरिका में जैसे रहते थे, तो वहाँ पर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के साथ जैसे बहुत ही जैसे अन्याय होता है ना किसी के साथ, जैसे अफ्रीका वाले हैं अगर वहाँ कोई रहते हैं तो उनको अपने बेसिक जो राइट्स है वो दिया नहीं जाता है. ऐसे कई सिचुएशंस होते हैं, तो ये बहुत एक्टिवली होकर के न्याय के लिए जैसे वहाँ पर भी लड़ते थे. Yes, there was a lot of segregation. And so my methods at that time were definitely, they were nonviolent, because Dr. Martin Luther King was very close to Mahatma Gandhi. They became friends, and the nonviolent philosophy of Gandhi also was taken up by Dr. Martin Luther King. And so we were nonviolent on the outside, but in the inside we were angry. तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जो है वो महात्मा गांधी जैसे क्लोज थे. तो महात्मा गांधी जी तो नॉन वायलेंस, अहिंसा का जैसे फॉलो करते थे, लेकिन ये लोग अंदर से बहुत नाराजगी इनको होता था, क्योंकि अन्याय होता है ना, लोगों के साथ जो अन्याय होते देखा नहीं जाते, लेकिन अंदर से बहुत गुस्सा तो था कि कैसे इनको न्याय दिलाया जाए. Yes, and so that went on for a period of time with this demonstration. And then Dr. Martin Luther King was killed. He got shot. He died just like how Mahatma Gandhi was killed. So you were with Baba. Violently. You were with Baba at that time? I was not with Baba at that time in the 60s. So therefore I had this anger, and I was all militant. It was a different strategy, right?
But then I became so, something wasn't right. I wasn't feeling happy. I lost connection with who I was. तो ये लड़ाई झगड़ा करते करते खुद भूल गए थे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी विशेषताएं क्या है, मेरी क्वालिटीज क्या है। तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग का भी जैसे उस समय जैसे उनको भी मारा गया, तो ये सारे सिचुएशन में जैसे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा था, ऐसे संस्कार इनके जैसे बन गए थे और ये खुद अपने को ही भूल गए थे लड़ाई झगड़ा करते करते, मैं हूँ कौन। My future sanskar of another world was calling me. It was bubbling up. I was saying, "Oh no, this, you don't do it this way." And so I went to Africa. I said, "I don't know who I am. I must go to Africa. Maybe I will learn who I am, learn more about myself." So why And you that's went why to I went to Africa? Africa. Why you went to I went to Africa? Africa. Why I you went to Africa. Why? Because I wanted to learn more about myself and about my history. And so I didn't know who I was. I was fighting and being and agitating for civil rights and human rights. But there was something missing. And it is because I didn't know about soul rights. But I thought that going to Africa, perhaps I will learn something more. I didn't learn about soul rights there, but that's another story. So I went to Africa, and that's when I taught teachers. I trained teachers to be educators. And in the तो meantime, learning about myself. तो जैसे यूएसए में जब थे अपने आप से खुश नहीं थे क्योंकि सोचते थे क्या लड़ाई झगड़ा है, तो ये अफ्रीका गए और जो टीचर्स को भी ट्रेनिंग करने के लिए गए और साथ साथ एक खुद अपने बारे में जानना चाहते थे कि मैं कौन हूँ, मैं लाइक एग्जैक्टली खुद के बारे में जानना चाहते थे, खुद के बारे में समझना चाहते थे, इसीलिए अमेरिका से अफ्रीका चले गए। So while I was there, I became a vegetarian, and I was then later into understanding the need for celibacy. And so while I was there for 5 years, I was a vegetarian. I was also celibate. That's why when I came to Raj Yoga, I wanted to know if I could continue in that trend. So you decided to become vegetarian by yourself or someone told By you to? myself. No, by myself. It's by myself. I felt So that was the way to live life, because there was so much violence around, violence in the atmosphere, violence with the animals, violence with people. And when you are nonviolent, then you can't be violent you have to be peaceful. But how to find the peace was not there. How to eliminate my anger wasn't there, तो because anger is violence. जैसे ही अफ्रीका आए तो पूरा जैसे 5 साल में इन्होंने वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन को छोड़ दिया, वेजिटेरियन बन गए, कंप्लीट प्यूरिटी को भी इन्होंने धारण किया, क्योंकि इतना कुछ दुख है, इतना कुछ हिंसा चलता है, कैसे हम इसमें बदलाव लाए। तो इन्होंने सोचा मैं वेजिटेरियनिज्म में चली जाती हूँ, प्यूरिटी को फॉलो करती हूँ। तो जैसे बाबा इनको ज्ञान में आने के लिए जैसे प्रिपेयर कर रहा था। Yes, so there I learned about respect for the environment, respect for animals, respect for yourself in terms of how you use your body. Those were the things that came into my being as I was there living. But I didn't know how to do that. And so when I came back to the West, I wanted to explore. And there was Raj Yoga. And I learned that those principles were being the foundation of Raj Yoga. Plus, I learned that I was a soul. It's not that I had a soul, but that I was a soul. And so that's sparked my interest in spiritual rights. So I moved from civil rights and human rights to spiritual rights. तो जैसे इनको ज्ञान मिला और राज योगा का फाउंडेशन ये है सात्विक आहार और प्योरिटी, तो इनको बहुत अच्छा लगा जो ह्यूमन सिविल राइट्स के लिए, उन राइट्स के लिए जैसे ये लड़ाई करते थे, झगड़े करते थे, तो स्पिरिचुअल राइट वहां से जैसे शिफ्टिंग इनका हो गया स्पिरिचुअल राइट, आध्यात्मिकता उसके हमारे राइट्स क्या क्या है उसके जैसे उस लाइन में जैसे इनका परिवर्तन हो गया। So that's when my spiritual journey began with Baba. And I
gradually, Baba talks about anger, and I had to check myself because I still had anger. And then with all the yuktis and the Srimad that Baba is sharing with us in the Murli and checking the self, I found that my anger gradually began to subside. And I was surprising myself. Things weren't affecting me like how they used to. And I was finding peace. And I learned that peace was my birthright, my spiritual birthright, which is nonviolence. And so that was very comforting to me. And that was my target. That was my aim and objective, to become very peaceful. तो जैसे ज्ञान में आए बाबा मुरलियों में जैसे क्रोध के बारे में बोलता है तो क्रोध नहीं करना चाहिए, तो धीरे धीरे क्रोध भी इनका कम होता गया, शांति का अनुभव होता गया। तो मैं पीसफुल आत्मा हूँ, शांति तो मेरा ही अपना स्वधर्म है, ये सारी बातों का जैसे इनको अनुभव होने लगा। I'm also a very active person in my community, and I have many community groups, and I use Baba's knowledge to help communities to appreciate themselves and to appreciate their community. And it has been very useful seeing persons raise their consciousness levels, how to get a better diet. So many persons are now being vegetarians, and that is a very good progress, I think. When I first started, I had problems with my community, my professional community. They were all non-vegetarians, and I was a vegetarian. And so when we gather for social functions, the professional social functions, I wouldn't eat. And so they wanted to know, what is wrong with you? You're not going to survive in this profession because you have to be tough. And vegetarians aren't tough. And so I would say, okay, I will see what happens. So we will see. And they would ask if I was a vegetarian because someone told me to be a vegetarian. I said, no, it's because I think it's the best way of life, and it is good for your health. So that was the reason I gave. I didn't say Raj Yoga. I just said it was good for your health, and it's the best way to live, because you don't kill anybody, or you don't kill anything. So that was my excuse. तो देखिए, इनका विशेष अनुभव यही रहा है जितना मैं समझ रही हूँ। इन्होंने जो ज्ञान को अपने प्रोफेशन में जैसे अप्लाई किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक में जॉब करते रहे ना, ये भी तो बहुत अलग एक अनुभव है। तो सिस्टर जैसे इनका जो कम्युनिटी ग्रुप्स में इनका जाना होता था, अपने जॉब के लिए भी जाना होता था, सेवाएं करने के लिए भी जाना होता था, तो वहाँ पर जैसे कम्युनिटी कोई भी फंक्शन है जनरल पब्लिक वाला, तो वहाँ पर जैसे नॉन वेजिटेरियन खाना पड़ता माना रखते हैं वहाँ पर, तो सिस्टर बोलते थे मैं नहीं खाती हूँ नॉन वेजिटेरियन। तो फिर वो पूछते थे व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, क्यों आप नहीं खा रहे हैं सब। तो ये राजयोग या मेडिटेशन वगैरह नहीं बोलती थी, ये यही बोलती थी कि इतना अच्छा नहीं नॉन वेजिटेरियन मेरे लिए, नहीं मुझे पसंद नहीं, इसीलिए मैं वेजिटेरियन ही फॉलो करती हूँ। ऐसे इनका यही विशेष अनुभव यही है कि जैसे उन लोगों के बीच में रह के, नॉन बीकेस के बीच में रह के, अपने प्रोफेशन के बीच में रह के कैसे इन्होंने ज्ञान को जैसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया है। Since then, many of them are now have become vegetarians, not because of spiritual reasons, but because they have the NCDs and non-communicable disease like diabetes and hypertension, and the doctors are saying you mustn't eat meat. So now everybody is doing vegetarianism. So that's a progress. And also because I'm also into culture, they have a festival where persons come and show their food, and there were all types of foods being shown on display using the local products. And so I asked Sister Kamud if we could have a part in that, but we will demonstrate vegetarian food. This is back in the 80s. And she said yes, and so we went and we did that and asked their permission, but they didn't include us in their exhibition. They put us to the side as though we were something to, stand off from.
So we have a little, we were on the side. And now in that festival, vegetarianism is a big display and they get all the prizes. And so when we were there, we also got prizes for vegetarian food, but it was separate and distinct from the other displays. So still, but now it's all integrated. Now even though people came to you, even though you were separate, people came to you. Yes, people came, but we weren't into the. We were in the same hall and have the same kind of facility, but those were over on that side on the left, and we were over on the other side, and we had a small exhibition, but on the other side. So we were like very conspicuously separated. Let's put it that way. तो जैसे उन दिनों जैसे धीरे धीरे कम्युनिटी की सेवा करते करते उनको भी वेजिटेरियन इन्होंने बना दिया, क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं ना हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है या ऐसे बीमारियों में नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए। फिर करते करते वहाँ पर एक फेस्टिवल हुआ करता है जहाँ पर सभी अपने अपने एग्जीबिशन टाइप होता है ना, तो इन्होंने सिस्टर कुमुद से बात करके बोला कि हम भी वेजिटेरियन का एक हम स्टॉल लगाते हैं। एक स्टॉल होता है ना जैसे एग्जीबिशन में, तो लेकिन इनको जो मेन एग्जीबिशन था और क्योंकि इन्होंने वेजिटेरियन के बारे में ये इन्होंने बताना चाहा, तो इनका जो एग्जीबिशन का जो स्टॉल है बोला आप दूर रखो अपना, इस हमारे साथ नहीं मिलाओ। तो फिर भी इनके पास लोग आए, वेजिटेरियन के बारे में जाना समझा, लोगों को फिर अच्छा लगा। Yes, and then also another interesting story is that when Brother Nuir visited us, I got the inspiration to have a festival called Found, Festival of Understanding and Development. And I wanted to bring all of those who had a vision, a forward vision, to come together so that we could have a rise in the consciousness of the people. And we had several film festivals, and we had the United Nations came. I can't remember her name, but she came to open our festival, and Daddy Janki was also there. She also opened our festival of Found. And of course, it was small. We had it for 3 consecutive years. And what happened then is it was taken over by a local newspaper and became a very large festival in the park. But they changed its name and it became a health festival. But we think that we were the foundation. We sowed the seeds for this type of interaction and this type of consciousness raising. Sister, what happened when Brother Nirver came? You said there was something. He was giving us a class and sharing about how to do service and the kind of service that was needed. For some reason, as he was speaking, I got that touching because I saw Raj Yoga as a means for development. And I saw the need within the nation for development, opening the consciousness and opening the third eye. I wouldn't say it in those words, but the concept was there so that they could broaden their understanding. And so I took this concept we gathered it together and we put it on for 3 consecutive years. And we had persons who were doing things in craft, and we had persons who were doing hatha yoga, and we had persons we did some meditation. And Daddy Janki, when she came to one of them, she gave a class. And then United Nations person, she came and she said how it was part of the United Nations mandate to help people to understand their inner development better. So it was very well understood and very well accepted. Okay. तो जैसे निर्वेर भाई जी भी वहाँ पर गए हुए हैं, जानकी दादी भी गए, तो जब ब्रदर निर्वेर जी वहाँ पर गए हुए थे तो उन्होंने कहा कि कैसे सर्विस करनी है, कैसे आपको यहाँ पर सेवाएं करनी है। तो इनको जैसे टचिंग हुआ कि यहाँ पर
जैसे हेल्थ फेस्टिवल्स होते हैं ना, हेल्थ फेयर्स होते हैं, वो करना चाहिए। तो जैसे यूनाइटेड नेशन से भी वहाँ पर कोई गए जिन्होंने उसको इनॉग्रेशन वगैरह किया, तो कैसे कॉन्शियसनेस जो डेवलप हमको करनी है, राज्यों के आधार से क्या क्या हमको फ़ायदे होने वाले हैं, ये सारी बातें उस फेस्टिवल से जैसे लोगों तक पहुँची, जिसके द्वारा सेवाएं करना इजी हुआ। Yes. Okay. Also, part of what we've been doing is I've been part of the development of values education. I have been one of the foundation members there, and so I've woven values education into the educational system. And I once, in the British Virgin Islands, I had a values-based school, a values-based school. Values-based course. A school that was values-based. तो फिर इनको वैल्यू एजुकेशन के बारे में जैसे सेवाएं करना शुरू किया, तो कैसे वैल्यू एजुकेशन को एजुकेशन सिस्टम में ला सकते हैं, वैल्यूज के उसको जैसे स्कूल में हम कैसे यूज कर सकते हैं, उस रिलेटेड भी इन्होंने जैसे सेवाएं किया। So that was another weave into the practical. Yeah. And the other weave was Million Minutes for Peace. And so we the whole island stopped for peace. Million Minutes for Peace. So million minutes, yeah. Yes. And since then, it has been taken up as a national thing. And we have a peace for Barbados, where people are holding hands around the entire island. So that also became a national idea. And our philosophy now has been one of peace. तो जैसे वैल्यू एजुकेशन की सेवाएं शुरू किया ना, प्रैक्टिकल हो गया ना, कैसे बाबा का ज्ञान स्कूलों में जैसे डाल सकते हैं, कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका हो सकता है, उस प्रकार की सेवाएं इन्होंने की है। उसके बाद मिलियन मिनट्स ऑफ पीस का जो प्रोजेक्ट है वो भी वहाँ पर किया गया, जिसके वो एक नेशनल आइडिया बन गया पूरे कंट्री में। जैसे उस सेवा की वजह से मिलियन मिनट्स ऑफ पीस का जो प्रोजेक्ट चला, उसकी वजह से एक नेशनल लेवल, एक देश के स्तर पर सेवाएं हुई, जिसकी वजह से बाबा का नाम भी बाला हुआ। So I've seen where with this weaving, with the cooperation of the family, I've been able to influence the trends and of the society, and because it's a small island, and so I feel good about that, and I give Baba thanks every day. I'm so full of gratitude for having the fortune for having come to Raj Yoga and be in connection with Baba and his wisdom. So I call him my ancient ancestor. तो इनको जैसे बहुत खुशी होती है कि राज योगा के द्वारा बाबा को इन्होंने पहचाना, और बाबा को पहचानना माना यही सबसे बड़ा जैसे जीवन का भाग्य है, वो भी जैसे इनको महसूस होता है। और what is that ancient ancestor? What happens now is that everybody is trying to find their ancestry. This is in the West, so everybody is going to find their roots to see where they're connected, because there's been so much migration in the world. People have been going there and there and there and there everywhere, so there's a lot of mixture. And so especially people who have been brought from Africa to the different parts of the world, they're trying to find their ancestry, trying to find their roots. And so that's a very big thing in the West. And so when they go back about trying to find their ancestry, I always say, well, your first ancestor is Brahma Baba. He's the first man, so you have to go right back there. He's the great grandfather. क्या है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वहाँ पर एक प्रथा है, सबको इंटरेस्ट है कि हम अपने पूर्वज कौन है उसको ढूंढें। जैसे पिताजी के भी पिताजी होते हैं ना, पूर्वज हमारे एंसेस्टर्स कौन है उनको हम पता लगाए। तो इनको भी सिस्टर को जब ज्ञान मिला तो कितना अच्छा हम अपने पूर्वज को पहचान पाए। ऐसे ही सिस्टर जब सेवा करती है तो सबको बताती है कि आपका जो पूर्वज है ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा ही आपका पूर्वज है, तो और किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, आपका एंसेस्टर आपको यहाँ पर जैसे मिल गया। Right. And so I know we are coming towards the end, because I have benefited so much from, as a student of Raj Yoga, I am beginning to realize we had a class with Brother Charlie on Saturday,
And he was saying that if you really want to stay in Raj Yoga and really enjoy it, you have to fall in love with Baba. And so I realized that I had fallen in love with Baba. And that's what has sustained me over these years. And I went back into my archives and realized that I've been writing these letters to Baba all the time, these love letters. And this validates my love for him. And I found one that I find so interesting, and I'd like to read it for you. Okay, wait. Let me translate this. तो रिसेंटली ब्रदर चार्ली का इनका क्लास हुआ इनके वहाँ पे, तो उन्होंने बोला इस ज्ञान में आपको एंजॉय करना है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात है बाबा के साथ आपका गहरा प्यार हो, फॉल इन लव विद बाबा, बाबा के प्यार में डूब जाना है, बाबा से प्यार करना है। तो ये सिस्टर भी क्या करती थी, शुरू में लव लेटर लिखती थी बाबा को, तो उस लव लेटर को हम सबको पढ़ के सुनाएंगे अभी। यस, गो अहेड सिस्टर। Okay, it is called Ode to Bapdada, and it was written in 2016. Okay, so Baba, you have to translate. Why do I love you? बाबा मैं क्यों आपसे प्यार करती हूँ? Let me think it through. I have been pondering this for years, so now let me count the ways. Let me count the ways. Let me reckon the ways I love you. Okay, बाबा मैं क्यों आपसे प्यार करती हूँ, कितने सालों से मैं आपसे प्यार कर रही हूँ, मैं समझ नहीं पाई कि मैं क्यों आपसे प्यार करती हूँ, तो मैं क्यों आपसे प्यार करती हूँ, उसका रीजन क्या है वो मैं थोड़ा नोट डाउन करती हूँ अभी। या Let me see how many ways I love you. Yes. Okay. I love you more than I can express. It would take a whole kalpa, nothing less. So, Baba, you are... Yeah, one we will translate, then I'll be able to translate properly. One way, okay. Yeah. तो बाबा मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, पूरा कलब भी मैं एक्सप्रेस करूँ तो भी कम है, कितना मैं आपसे प्यार करती हूँ। Baba, you're ever in my mind. बाबा हमेशा in you my sweet solace find. Solace means serenity, peace, love. बाबा आप हमेशा मेरे मन में हो, आप मेरे चित्त में हो, आप मेरे चैन हो, सुकून हो, मेरे दिल के आराम हो बाबा आप। Your words I carry tenderly in my heart. आपके शब्दों को मैं दिल में बहुत प्यार से रखती हूँ। Even from the very start. Even from the very start, even from the very beginning, even from the very start. शुरू से मैं आपके जो बातें हो बहुत प्यार से अपने दिल में रखती हूँ। From you I can never be apart. मैं आपसे कभी दूर नहीं रह सकती हूँ। Your wisdom guides me every step. आपका जो ज्ञान है हर कदम पे मुझे गाइड करता है, राह दिखाता है। Without you, nothing I dare attempt. Nothing I dare attempt. आपके शक्ति के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। I love your secret yogic meeting. I like our sacred yogic meetings. बाबा मैं जो योग में आपसे मुलाकात करती हूँ ना, वो मीटिंग होता है ना, मुझे बहुत पसंद है। And your sweet children, Murli greetings. आप जो मुरली में ग्रीटिंग्स देते हो वो भी मुझे बहुत पसंद है। What can replace your lovely gaze? Sorry, come again. Sorry. What can replace your lovely gaze, your lovely look? Gaze, look. आपका जो प्यार भरा लुक है, उसके कंपैरिजन में संसार में कुछ नहीं। With smiles all glowing from your face. आपके जो मुस्कुराहट है उसके सामने भी कुछ नहीं संसार में। And when I think I cannot do, with your yuktis always guide me and pull me through. तो मुझे लगता है ना कभी-कभी मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, आप जो युक्तियाँ बताते हो ना उसके आधार पे मैं आगे चल पाती हूँ। What sweet guidance you have, like Man above and Maria Ji above. तो आप जो महामंत्र आपने दिया है मनमना भव मध्याजी भव, उसके आधार पर मैं चलती हूँ। They pull me right back into your heart.
वो वापस मुझे आपके दिल में जैसे वापस बिठा देते हैं, वो जो 2 महामंत्र है। Oh, Baba, how can we ever be apart? ओ बाबा, मैं आपसे दूर कैसे रह सकती हूँ? You have become my Satguru, आप मेरे सद्गुरु हो, my truth, आप मेरे सच्चाई हो, my oh, wow, wow, wow. आप सब मेरे वाह वाह वाह, जितने भी मेरे वाह 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 है, आप हो बाबा, You, आप हो। you wake me from my slumber of Kumbhakarna. आपने मुझे कुंभकर्ण की नींद से जगाया है, And sprinkle me with your essence for Dharna. और आपने मुझे ज्ञान का जो एसेंस है ना, धारणा है, उससे आपने मुझे जगाया है। Weave in that magic, which is your speciality. आप जो Weave in that magic, which is your speciality. बाबा, आप जादूगर हो ना, आपने अपने जादू के आधार पर मेरे ऊपर भी जादू कर दिया। You're changing me from human to Brahmin to angel to deity. आपने मुझे इंसान से ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण से फरिश्ता, से फिर फरिश्ता से फिर देवता आप मुझे बना रहे हो। You opened my third eye and made me fly. आपने मेरा तीसरी आंख खोल दिया और मैं उड़ने लगी हूँ। Far beyond the Milky Way. ओके, मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके भी ऊपर मैं उड़ने लगी हूँ। अभी बहुत दूर है वो, उससे भी ऊपर मैं उड़ने लगी हूँ। Up in Paramdam, I sometimes and often stay. मैं परमधाम में आके बीच बीच में रुकती हूँ। You loving me, loving you, make my cycle complete. हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ बाबा, आप मेरे से प्यार करते हो, इससे जो साइकिल है कंप्लीट हो जाता है, भरपूर हो जाता है। In that I will never be in defeat. हाँ, आप मेरे साथ हो, वो प्यार की शक्ति से मेरी हार कभी नहीं हो सकती है। I made it clear, Baba dear. ओ डियर बाबा, मैंने इसको क्लियर कर दिया है। My love is strong. मेरा प्यार बहुत स्ट्रांग है आपके प्रति। To you I belong. मैं आपको बिलोंग करती हूँ, मैं आपकी हूँ। But you knew that all along. मैं कितना आपसे प्यार करती हूँ, मैं कितना आपको बिलोंग करती हूँ बाबा, केवल आप इसको जानते हैं, कोई नहीं समझ सकता है इसको। By the way, Baba, I know you have noticed. You have, sorry? By the way, Baba, I know you've noticed. हाँ बाबा, आपने कुछ नोटिस किया है, आपने कुछ देखा है। But that little by little in my daily practice, मैं धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस करके I'm moving towards, guess what? बाबा, मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करके कुछ बन रही हूँ। आप गेस करो मैं क्या बन रही हूँ करके बाबा से पूछ रही है कि बाबा आप गेस करो। Bap Saman. बाबा, मैं बाप समान बन रही हूँ। Yes, Bap Saman. यस, बाप समान बन रही हूँ। Merging in your love. आपके प्यार में मैं खोती जा रही हूँ। That is my truth. वो मेरी सच्चाई and it will happen. और वो जरूर होगा, होकर ही रहेगा। I said, wow, Baba, wow. वाह बाबा वाह। ये इनका That लव was my लेटर, ode to Baba. ये 2016 में इन्होंने बाबा को लव लेटर लिखा था, ये पढ़कर सुनाया वो लेटर को। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। So that's my love poem to Baba called Ode to Bab Dada. Sorry, what to Bab? It's called an ode. An ode is a poem of praise. Okay. And a lot of European writers like Shakespeare and those persons, they wrote odes. Okay. But ode to let's say something they see that's beautiful, ode to a nightingale, ode to a Grecian urn. But I thought I needed to have an ode to the one who is extra beautiful, extra जैसे everything. कोई भी So जैसे शेक्सपियर वगैरह, इन्होंने बहुत प्यार को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना, पोएटिक रूप में एक्सप्लेन किया है। ऐसे इनका जो लेटर एक पोएटिक रूप में, एक कविता के रूप में बाप दादा के प्रति जो प्यार है, उसको इन्होंने इन शब्दों द्वारा जैसे एक्सप्रेस किया है। Yeah, everyone got just lost in Baba's love. We can see their faces, they are all sparkling with Baba's love.
सब बाबा के प्यार में डूब गए ना, ऐसे ही लग रहा है ना? Yeah, everyone just Pardon? got lost in Baba's love. Yes. So me too, Okay. me too. Very nice You too. point. Right. Yes. Yeah. Yes. So that's my story, and it is my glory, my story and my glory. Yes, ये इनकी कहानी है, यही इनका प्राउड है. स्टोरी ग्लोरी दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं. Yes. 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 Wonderful. What a story I, and what a glory. Okay, sister, what a story and what a glory. And what kind of great feeling you have in your heart for Baba. It's really, really a yes. wonderful story. And yes, you have fallen in love with Baba. Indeed. Okay. Yes. Yes. And your story is a transformation from human rights to spiritual rights. Okay. And Yes. Yes. isn't, Yes. isn't, Yes. isn't it a great thing that you love celibacy and vegetarianism before coming into this knowledge? It's really a great Before coming, yes. so you have Yes. great Yes. feeling, you have a great part in this world drama. Wonderful. So we are very happy listening to your experience. Wonderful. Okay. So प्यारे भाई Thank you और so much बहनों, for inviting me. यू आर मोस्ट वेलकम. एंड प्यारे भाई और बहनों, देखो लेटर देखा आपने, पढ़ा मतलब सुना लेटर, कितना लंबा और कितना खूबसूरत लेटर लिखा था. व्हाट ए ग्रेट लेटर यू रॉट to Baba. Okay, sister. The love letter, not only letter, but a great. Thank you, brother. And I noticed one thing, and that was Savita Ben enjoyed the most while translating the love letter. Okay, Savita Ben, you enjoyed the most. Yes. She did what? She, I think it's the first It's time. वो very लव में beautiful. पड़ गई, वो भी लव में पड़ गई थी हाँ, सुप्रभा के. I think it's the जी. बहुत first. अच्छा देख रहा था मैं भी. I think it's the first time experience for Savita Ben to translate anyone's love letter from English to Hindi. Okay, Savita Ben बराबर ना. तो वाह जी भाई, जी सभी जी. सभी एक हाथ से धन्यवाद करो, कितना अच्छा लव लेटर भी सबको सुनाया और कितनी गहरी फीलिंग है. और and today is double foreigners day, sister, because Baba has taught yes, double Baba. foreigners day. so Yes. today is double foreigners day. Okay, wow, wonderful, Yes. wonderful. Thank you, brother. Okay, Yes. Yes. वाह, Yes. Yes. बहुत Yes. बहुत आनंद आया. Thank you so much. Thank you so much. थैंक Love. यू. और डॉक्टर Yes. साहब, आप कहे कुछ. Thank you, please. मैं पूछता हूँ, I would like to ask her about history and geography, which has been said by Baba. How she is comparing it and how she can tell about it. What she can tell about it. Please explain. I didn't understand. Like Baba also tells about history and geography, and you also used to teach history and geography. Like, bhai sab, yeah, how we would like to Yes. connect both, or Well, I think that the history and geography has been false. It is always told by those who are the ones who have fought the war for whatever impure reason and they have won. And so they always spin the history in their favor. You never hear the story of the history of the ones who were defeated. So it's not a whole story, it's a skewed story. And the history is always there to make the ones who were not winners feel less than victims and sorrowful. It is a sort of a superior kind of history that makes one superior and one inferior. And so it's false. So when I heard of the cycle and what happened in the cycle, how there is the elevated section and then there is the degraded section, I understood. One is humanity doing its own thing and causing sorrow in the world, which we can easily forget. And then there's the one that is bringing us up to our glorious history and here a glorious stage, which we can remember and should remember. So it is easy to let go of that falsehood and remember the one, our future past, I call it. So the past has been sorrowful and the future past is going to be
happy and Yeah. glorious. So I find it very easy to let go of that falsehood. तो जो हिस्ट्री ज्योग्राफी सिस्टर जो पढ़ाती थी ना, उसमें क्या होता है, जो हारते हैं उनको कभी नहीं याद किया जाता है ना, जिनकी जीत होती है उनको याद किया जाता है। और जो भी जीत होती है हिस्ट्री ज्योग्राफी में राजाओं की, जिनकी भी, तो जैसे किसी को दुख मिलता है, किसी की जीत होती है, किसी की हार होती है, और फिर उसमें उस हिस्ट्री ज्योग्राफी में जैसे मजा नहीं है। लेकिन बाबा जो हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाता है वो कितना क्लियर है पूरा साइकिल में, हम कैसे ऊंचते नीचे बन गए हैं, वापस अभी हमको कैसे बाबा ऊंचा बना रहा है, और इस हिस्ट्री ज्योग्राफी कितना इंटरेस्टिंग है जो बाबा हमको सिखाता है। तो ये दोनों कंपैरिजन करना जैसे इनके लिए अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कितना फॉल्सहुड है, कितना गलत है जो वो जो हिस्ट्री ज्योग्राफी हुआ है, लेकिन बाबा की जो कहानी की हिस्ट्री ज्योग्राफी कितना ये न्यायपूर्वक है, वो इनको जैसे अच्छा लगता है। And as far as geography is concerned, I always have the thought of unity. And so the world to me at one time was one thing, one space. And I think they call it Pangea. And so we're all living together in unity is a very fascinating concept for me. And I really embrace that, where there's harmony and there is peace. And so I like that kind of geography. So even though my little island is here, it is still part of the whole beautiful world. तो जैसे And so I like that. ज्योग्राफी की Yeah, जब that's the बात geography. ज्योग्राफी की जब बात आती है तो इनको ये अच्छा लगता है यूनिटी। जितना भी टुकड़ों में अभी दुनिया बटी हुई है ना, बाबा उसको एक कर रहा है, अभी एक ही भारत होगा, तो उसमें शांति होगी, हारमोनी होगा, प्यार होगा। तो यूनिटी माना, ज्योग्राफी माना यूनिटी, एकता की जो दुनिया बाबा बनाने वाला है, वो इनको अच्छा लगता है। And when the continents split apart, we just went in different places. And now we're coming back to the point. So we became fragmented because of the cataclysmic conditions, the earthquakes and everything. Yeah, pew, went, and now we are coming right we're coming right back again, back into the oneness, into the unity. या अलग अलग हम हो गए हैं अभी ज्योग्राफिकली, कोई कहाँ, लेकिन बाबा हमको एक कर रहा है। अर्थक्वेक वगैरह होता है तो अलग अलग हो जाते हैं, फिर जब सत्युग आएगा एक हो जाएंगे। तो ज्योग्राफिकली इनको अच्छा लगता है। बहुत अच्छा सिस्टर, अभी यहाँ पर आओ तो हम सबको निमंत्रण देते हैं। इंडिया में आओ तो हमारे बड़ौदा में जरूर आना है। They are inviting you to their center Baroda when you come to Madhuban next time. They are in Gujarat, 100 kilometers away from Ahmedabad. Okay. Oh, thank you. That would be lovely. That would be lovely. Yes. Nice. Thank you. सतयुग में तो इकट्ठे होंगे, अभी इकट्ठा होना है। What she says. Anyway, we will be together in the golden age, but now also we want to meet you. Here also we should be united. Yes, absolutely. Absolutely. Yes. It begins now, doesn't it? Yes. Yes. Thank you. Yes. Sister, I think and we're going to create together a beautiful new world. Yeah. सब मिल करके नई दुनिया बनाने वाले हैं। Sister, I think Vivian Richards and Sir Clive Lloyd both were from Barbados. Am I right or wrong? Who's that? Cricketer Vivian Richards and Sir Clive Lloyd. Oh, Vivian from Richards, Barbados, Garfield Sobers. Yes, from Barbados. We have very good cricketers, used to in the past. Yeah, very good cricketers. Yes. Yeah. Vivian Richards. Yes. Garfield Sobers. Yes. But yes. Brian Lara was now India is beating us. Yeah, but Brian Lara was from Trinidad. Is it okay? Trinidad. Yes. Yeah. He's from Trinidad. Yes. Okay. Now India is beating us. Right. Okay. I have to weave some more Baba's knowledge. I have to weave more Baba's knowledge into their heads. Right. Okay. So let's finish this meeting. Let's sit for 2 minutes in Baba's yard. Okay. We will meditate for 2 minutes and then we'll finish. Okay. So thank you so much. Thank you. थैंक यू फॉर शेयरिंग। और सविता बहन को तो बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, लेकिन सविता बहन को आज लव लेटर के ट्रांसलेशन में बहुत मज़ा आया, ये हमने खास अनुभव किया।
और अच्छा है, ये खुशी भी होना बहुत अच्छी बात है। चलिए 2 मिनट बैठते हैं। चलती 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 मुझे बाबा मिल गया है, मुझे बाबा मिल गया है। मेरे साथ चलते चलते, मेरे साथ चलते चलते वही गीता बस गई है, वही गीता बस गई है। मेरा भाग्य बनते बनते, मेरा भाग्य बनते बनते जो कह दिया बाबा ने, जो कह दिया बाबा ने, वो जमाना दिख रहा है, वो जमाना दिख रहा है। नई दुनिया, नई दुनिया बन रही है, नई दुनिया बन रही है। श्रीमत पर चलते चलते, श्रीमत पर चलते चलते मुझे बाबा मिल गया है, मुझे बाबा मिल गया है। मेरे साथ चल ओम शांति, ओम शांति, ओम Om शांति। Shanti, Om Shanti, Om Shanti.